Hello, this is Nitish Pandey. Today I am going to start Chapter 8 Introduction to Trigonometry, Exercise 8.3. So, today we will discuss about trigonometric ratios of complementary angles. So, I hope you all know about what is complementary angle. So, two angles are said to be complementary if their sum equals 90 डिग्री. मीन्स अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. आप लोग इसके पहले सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ चुके होंगे कि दो एंगल का एड 180 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. अगर दो एंगल का सम ये और इसका सम मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो उसी को क्या कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. ओके, इफ वन एंगल इज थीटा what is the other angle? So if one angle is theta then second angle is 90 minus theta. मीन्स अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 मिनस थीटा होगा. ओके, तो यही आप लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब 8.3 में trigonometric ratios of complementary angles and complementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum equals 90 degree. Okay, इसमें कुछ फार्मूला है जो आप लोग को याद रखना होगा. सो फर्स्ट फार्मूला इज sin 90 minus theta, sin 90 degree minus theta equal to cos theta, and cos 90 degree minus theta equal to sin theta. Tan 90 degree minus theta equal to cot theta, and fourth cot 90 degree minus theta equal to tan theta. Fifth cosec 90 degree minus theta equal to sec theta, and last is sec 90 minus theta equal to cosec theta. सो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा हमेशा, तभी आपको 8.3 चैप्टर बनेगा. ओके, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 8.3. क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट. क्वेश्चन नंबर 1 साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री. मीन्स आपको इसको इवैल्यूएट करके वैल्यू फाइंड करना. ओके, सो सॉल्यूशन हियर. साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री. आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं. ओके, साइन 18 डिग्री, सो वी कैन राइट कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. इफ वी सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 18 देन 72. सो 90 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा 72 होगा. तो 90 minus 80 equal to 7, and we know that sin 80 degree, and we know that cos 90 minus theta equal to sin theta. अभी बताएं आप लोग इसके पहले तुरंत, cos 90 minus theta equal to sin theta. तो what is theta here? 18 is the theta here. So this will be cancelled. This is the answer, one answer. Again this one solution here. Tan 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री. यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज करते. ओके, सो वी कैन राइट tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री. मीन्स अगर 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 डिग्री होगा. देन कॉट 64 डिग्री. tan इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 64 सो 26, इसके जगह पे 26, एंड वी नो दैट
tan 90 माइनस थीटा अभी बता चुके हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot theta and theta is here 64 degree and cot 64 degree. So this will be cancelled. One is answer. Okay. Now we solve question number 1. 3 is evaluate cos 48 degree minus sin 42 degree. So let us solve here. Cos 48 degree minus sin 42 डिग्री. सो इसमें या इसमें किसी को भी चेंज कर सकते हैं. हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको चेंज करेंगे. ओके, cos 48 डिग्री वी कैन राइट माइनस sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ sin 42 because sin 42 90 minus 48 equal to 42. That's why we write in the place of sin 42 equal to 90 minus 42. So cos 48 degree sin 90 minus theta, and what is theta here? 48 degree. So sin 90 minus theta. So we know that sin 90 minus theta equal to cos theta, and theta is here equal to 48 degree. So cos 48 degree minus cos 48 degree equal to 0 is answer. Are you getting my point? Is it clear? Question number 4. Solution. Cosec 31 degree minus sec 59 degree. So अभी बता चुके हैं आपको, इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, cosec 90 degree minus 59 degree, because we know that 90 minus 59 equal to 31. So that's why we can write in the place of sec cosec 31 degree equal to 90 minus 59, and sec 59 degree. And we know that cosec 90 minus theta equal to, what is theta here? 59. So we can write sec 59 degree minus sec 59 degree, and sec 59 degree minus sec 59 degree 0 is the answer. Any confusion? No. Now we solve question number 2. The first question number 1 is tan 48 degree minus 1048 degree tan 23 degree into tan 42 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1. मीन्स आपको शो करना है कि इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए. ओके, सो सॉल्व हियर. सॉल्यूशन 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री. ओके, सो 1048 degree into 1023 degree. We can write 1090 degree minus 48 degree, because we know that 90 minus 48 equal to 42. So we can write in the place of 1042 degree equal to 1090 minus 42, and 1090 degree minus 23 degree we can write, because we know that 90 minus 23 equal to 67. So that's why we can write in the place of 1090 minus 23 degree. So 1048 degree 1023 degree. Okay, 1090 minus theta, and what is theta here? 48. 1090 minus theta equal to cot theta, and theta equal to 48 degree. 1090 minus theta equal to cot theta, and cot theta equal to 23 degree. 1048 degree 1023 degree, and we know that reciprocal of cot theta equal to tan theta. So 1048 degree into 1 by 1023 degree. 1048 degree 1023 degree 1023 degree. What is answer here? 1 is answer. Proved.
Okay. In confusion means LHS equal to RHS. Now we will solve question number 2 का 2. Solution cos 38 degree multiply by cos 52 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree. हमको इसको सॉल्व करके जीरो लाना, ओके ना. सो cos we can write 90 degree minus 52 degree because we know that 90 minus 52 equal to 38, and cos 90 degree minus 38 degree in place of cos 52 minus sin 38 minus into sin 52 degree, and we know that cos 90 minus theta equal to sin theta, so theta is here 52, so sin 52 degree into cos 90 minus theta means sin 90 minus theta means theta equal to 38, so 38 degree, and sin 38 degree and sin 52 degree both are same, sin 38 sin 30 and sin 52, so both are same. इसको से इसको माइनस करेंगे तो 0 is the answer. Proved. Any confusion? Okay. Now we solve question number 3, and question number 3 is here. If tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, so find the value of a. Okay. So how will solve this question? Solution, what is given here? Given tan 2a equal to cot a minus 18 degree. So imply that tan 2a so imply that we can write instead of tan 2a cot 90 degree minus 2a, because we know that cot 90 minus theta equal to tan theta, and theta is here 2a, so cot 90 minus theta equal to tan 2a, so tan theta is here 2a, so cot 90 minus 2a equal to tan 2a, so we can write in place of tan 2a equal to cot 90 minus 2a and cot a minus 18 डिग्री. और आप लोग को हम पहले बता चुके थे कि ये इलिमिनेट होता है, ये कटता नहीं है. यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, तो ये कॉट क्या होता है? इलिमिनेट होता है, कभी भी कटता नहीं है. तो कॉट क्या होगा? इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा ऑटोमेटिकली. तो क्या बचेगा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री. सो 90 degree minus is here, so this will be plus, so 18 degree a plus a is here, minus is here, so 2a, so 90 minus 18 degree, 19 plus 18 degree equal to 108 degree, and 2a plus 3a equal to 3a, so we can write a equal to 108 by 3, 3 3 is 9, 3 6 is 18, so a equal to 36 degrees answer. Okay. Now we will solve question number 4 from exercise 8.3. Question number 4 is here. If tan a equal to cot b, so prove that a plus b equal to 90 degree. So here given that tan a, given that tan a equal to cot b, means tan a का जो वैल्यू हो cot b का इक्वल है, तो imply that we can write
tan A equal to tan 90 degree minus B, because we know that tan 90 minus theta equal to cot theta, and theta is what? So B is a theta here. So यहाँ भी tan है और यहाँ भी tan है. So tan will be eliminate. tan क्या होगा? eliminate हो जाएगा. So A and 90 minus B. So A minus B is here. इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा. A plus B equal to 90 degree proved. Okay. Now we will solve question number 5. Question number 5 is here. If sec 4a equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. इसके पहले बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन. कैसे बनाते हैं देखिए. Solution. What is given here? Given sec 4a equal to cosec 90 minus 20 degree. So we can write in place of sec 4a cosec 90 degree minus 4a, because we know that cosec 90 degree minus theta equal to sec theta, and what is theta here? 4a is a theta here, and equal to cosec a minus 20 degree, and cosec both are same, so cosec will be eliminate. What is 90 minus 4a equal to a minus 20 degree. So we can write 90 minus is here plus 20 degree equal to a minus is here plus 4a. So 90, 20, 110 degree equal to 5a. So a equal to 110 by 5. 5 2 is 10. Then 5 2 is 10. So a equal to 22 degree answer. Okay. Now we will solve question number 6, and question number 6 is VVI. Very important question. Okay. अच्छा समझिएगा. Question number 6 is here. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2. Okay. So how we will solve this question? Now solve this question. We know that for triangle ABC, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जानते हैं कि क्या होता है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. और यहाँ पे हमको प्रूव करना है बी प्लस सी. तो एंगल बी प्लस एंगल सी यही रहने देंगे, और 180 डिग्री माइनस एंगल ए एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे. ओके. सो एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डिवाइड बाय 2. सो एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 एंड
angle A by 2. So angle A plus angle C divided by 2. So 180 by 2 equal to 90 degree, and angle A by 2, taking sine both side. So sine A plus C by 2 and sine 90 degree minus A by 2. So sine A plus C by 2, and we know that sine 90 minus theta, and what is theta here? A by 2. So sine 90 minus theta equal to cos A by 2. Proved. यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे होगा बी सी, सॉरी बी होगा यहाँ पे बी होगा, ओके, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा. So sin B. So sin B plus C by 2 equal to cos A by 2 proved. Okay. Now we will solve question number 7. Question number 7 is express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. मीन्स इसमें हमको जो साइन 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, वो एंगल्स को हमको 0 से 45 के बीच में रखना. ओके. सो सॉल्यूशन हियर. सो गिवन दैट साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 degree, and we can write sin 90 degree minus 23 degree, because we know that 90 minus 23 degree equal to 7 degree plus cos 90 degree minus 15 degree we can write, and 90 minus 15 degree equal to 75 degree. So we can write in the place of cos 75 degree equal to cos 90 minus 15. So sin 90 minus theta, and what is theta here? 23. So sin 23 degree, sorry, sin 90 minus theta equal to cos theta, and what is theta here? 23. So cos 23 degree plus cos 90 minus theta, and what is theta here? 15. So cos 90 minus theta equal to sin theta, and theta equal to 15 degree. Answer. Thank you so much for watching this video. If you have any doubts from any question, you can ask me in my comment box. Okay. Thank you.